हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में हम इंट्रोडक्शन ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड निमोनिक्स ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स टू मेमोराइज these drugs. So I hope you watch my video till end so you can understand the basic concept of cholinergic agonist. In this video, we will discuss the introduction, and in the next video, we will discuss its drugs in detail. So, this is the very important lecture to understand the mechanism of action of cholinergic drugs. So, first of all, here there is an overview of cholinergic agonist. In which they are saying drugs affecting the ANS are divided into two groups according to the type of neuron involved in their mechanism of action. The cholinergic drugs, which are described in this and the following chapters, act on receptors that are activated by acetylcholine, whereas adrenergic drugs act on the receptors stimulated by the norepinephrine or epinephrine. So ANS include two types of drugs, which are number one cholinergic drugs and number one the cholinergic drugs and number two the adrenergic drugs. In this chapter we will discuss the cholinergic drugs. So cholinergic and adrenergic drugs act by either stimulating or blocking the ANS and which we are discussing in this chapter. So we are going to discuss the cholinergic drugs, and first of all we discussing the cholinergic neurons, and also in this video we'll discuss the cholinergic receptors at which the cholinergic drugs is performing an action and what is the basic mechanism of these drugs. So there is a cholinergic neuron. So cholinergic neurons, the preganglionic fibers terminating in the adrenal medulla, the autonomic ganglia, both sympathetic and parasympathetic, and the postganglionic fibers of the parasympathetic division use acetylcholine as a neurotransmitter. So this is the very important point for your multiple choice question, that the preganglionic fibers in autonomic ganglia, both parasympathetic and sympathetic, और पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑफ पैरासिम्पथेटिक रिलीज एसिटाइलकोलिन. सो सिंपथेटिक का जो प्री गैंग्लियोनिक है वो भी एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है, एंड इन दिस वे जो इसका प्री गैंग्लियोनिक है वो भी जो रिलीज करता है एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है सिंपथेटिक का भी, और जो पैरासिम्पथेटिक का पोस्ट और प्री दोनों एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं. द पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक डिवीजन ऑफ स्वेट the postganglionic sympathetic division of sweat glands also uses acetylcholine. Okay. अब वो यहाँ पे एक एक्सेप्शन बता रहे हैं कि जो postganglionic जो पोस्ट गैंग्लियन सिंपथेटिक डिवीजन का जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है, जो आपका स्वेट ग्लैंड्स हैं वो भी एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं. द पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक डिवीजन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स आल्सो यूजेस एसिटाइलकोलिन. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. चूँकि हमने ये डिस्कस किया है कि जो सिंपथेटिक डिवीजन होती है उसका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन डिस्कस करते हैं, बट फॉर दी sweat glands it releases acetylcholine. So it is a key it is a static point. In addition, cholinergic neurons innervate the muscles of the somatic system and also play an important role in the central nervous system.
और अब कोलिनर्जिक सोमैटिक सिस्टम में भी कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं. तो दिस इज द other point. So in this simple small paragraph there is a three major multiple choice question that the preganglionic fibers of parasympathetic and sympathetic division both releases acetylcholine. Number two, post uh, the postganglionic sympathetic division of sweat glands also releases acetylcholine. Number three, the somatic system also play an important role in releasing cholinergic neurons are also involved in releasing the acetylcholine in case of the somatic system. So other here is the neurotransmission at cholinergic neurons. So neurotransmission in cholinergic neurons involves six steps. So first step is synthesis. Second step is a storage. Third, release. Four, binding of acetylcholine to a receptor. And number five is degradation of the neurotransmitter in the synaptic cleft. Here they have mentioned the definition of the synaptic cleft, which is the space between nerve endings and adjacent receptors located on the nerves or effector organs. And number six step is a recycling of choline and acetate. So first of all, acetylcholine is formed. There is a synthesis. जाहिर बात है कोई चीज़ बनेगी फिर रिलीज होगी. So acetylcholine is formed by the choline. Choline is transported. So choline is transported from the extracellular fluid into the cytoplasm of the cholinergic neuron by an adrenergic dependent carrier system that co-transports sodium and can be inhibited by the drug hemicolinum. तो सबसे पहले न्यूरॉन के अंदर कोलिन एंटर होता है और इसकी एंट्री को हेमिकोलिनियम जो है वो ब्लॉक कर सकता है. तो अगर कोई ऐसी ड्रग हो या कोई ऐसा प्लांट आप खा लो जिसमें हेमिकोलिनियम है तो आपकी एसिटाइलकोलिन की फॉर्मेशन इनहिबिटेड हो जाएगी. एसिटाइलकोलिन की फॉर्मेशन को आप इनहिबिट कर सकते हो बाय गिविंग द हेमिकोलिनियम. Choline has a quaternary nitrogen and carries a permanent positive charge, thus cannot diffuse through the membrane. So the uptake of the choline is the rate limiting step in the acetylcholine synthesis. तो आप इसको रेट लिमिटिंग स्टेप क्यों कह रहे हो? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिन एंटर होगा देन द अदर प्रोसेस हैपन. जब कोलिन ही एंटर नहीं होगा तो फिर एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाएगी. फर्दर प्रोसेस ही नहीं होगा जब आपके पास इनिशियल इंग्रेडिएंट ही नहीं है. So it is a rate limiting step, the entry of the choline into the neuron. So choline acetyl transferase catalyze the reaction of choline with acetyl coenzyme A to form the acetylcholine in the cytosol. So जब आपका choline न्यूरॉन के अंदर एंटर हो जाता है तो आफ्टर एंट्री choline जो होता है वो आपके एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म द एसिटाइलकोलिन और इस रिएक्शन को प्रमोट करता है कोलिन एसिटाइल को ट्रांसफरेज विच इज़ एन एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, इस रिएक्शन को फॉर्म करने में हेल्प करेगा. सो दिस इज द सेकंड स्टेप. वी विल डिस्कस वी विल सी दिस in the diagram in the later page. This diagram we already have discussed in the previous video. So if you want to understand this diagram, you can see that video. My first video that I have uploaded before this lecture. So the second step is the storage of acetylcholine in the vesicles. स्टोरेज ऑफ एसिटाइलकोलिन. फर्स्ट स्टेप में हमने सिंथेसिस पढ़ी जिसमें कोलिन जो है न्यूरॉन के अंदर एंटर होता है. आफ्टर एंट्री वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिटाइल कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज और कोलिन की एंट्री को जो है वो हम इनहिबिट कर सकते हैं बाय गिविंग हेमिकोलिनियम.
अब the second step is the storage of acetylcholine in vesicles. कि आपकी जो acetylcholine है वो किस तरह से store होगी vesicles में. Acetylcholine is packed and stored in the presynaptic vesicles by an active transport process coupled to the efflux of protons. So the mature vesicles contains not only acetylcholine but also adenosine triphosphate, which is ATP, and proteoglycan. Co-transmission from the autonomic neuron is the rule rather than the exception. This means that the most synaptic vesicles contains the primary neurotransmitter, acetylcholine, as well as co-transmitter that increase or decrease the effect of the primary neurotransmitter. So this is a very important point कि जहाँ पर आपके वेसिकल्स में एसिटाइलकोलिन बनता है वहाँ पर इसके रिलीज को इन्हांस करने के लिए और या इसके रिलीज को डिक्रीज करने के लिए को ट्रांसमीटर होते हैं विच इज द एटीपी और प्रोटियोग्लाइकेन. दीज टू को ट्रांसमीटर आर ऑल्सो stored in the vesicles. These two vesicles are also stored in the vesicles along with the acetylcholine. So this is this is also the multiple choice question too. The other co-transmitter which is present in the storage vesicle is ATP and proteoglycan. Third step is the release. This step, okay. When an action potential propagated, इट मीन जब आप कोई स्टिमुलस आता है, कोई एक्शन पोटेंशियल आता है, by voltage sensitive sodium channels arrives at a nerve ending, voltage sensitive calcium channels on the presynaptic membrane open, causing an increase in concentration of intracellular calcium. Elevated calcium levels promote the fusion of synaptic vesicles with the cell membrane and the release of their contents into the synaptic space. This release can be blocked by the botulinum toxin. In contrast, the toxin in black widow spider venom causes all the acetylcholine stored in synaptic vesicles to empty into the synaptic gap. So, here the antagonist, this is the antagonist too. So they are saying कि आपकी जो acetylcholine है जो vesicles के अंदर stored हुए हुए हैं, अब उनका रिलीज कैसे होगा. जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल आएगा जिस सोडियम चैनल्स का, तो उससे क्या होगा कि कैल्शियम इनटेक होगा और सोडियम आउट इनटेक होगा. जब कैल्शियम इनसाइड द न्यूरॉन आएगा, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करेगा. जब इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल होगा तो जो आपके वेसिकल्स हैं वो नीचे मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच होंगे और अपना अंदर जो एसिटाइलकोलिन स्टोर किया हुआ है वो रिलीज करेंगे इनटू द सिनेप्टिक स्पेस. अब क्या होता है कि अगर ये जो रिलीज है कैल्शियम का इंक्रीज होना और वेसिकल्स का एसिटाइलकोलिन को रिलीज करना, ये आपका ब्लॉक हो सकता है बाय द बोटुलिनम टॉक्सिन. ये बोटुलिनम टॉक्सिन जो है वो आपके ये आपका जो स्पाइडर वेनम होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है. द टॉक्सिन इन द ब्लैक विडो स्पाइडर वेनम कॉज ऑल द एसिटाइलकोलिन स्टोर्ड इन द synaptic to empty into the synaptic gap. ओके, बोटुलिनम टॉक्सिन इज अ सेपरेट थिंग. बोटुलिज्म की वजह से आपका जो ये वेसिकल्स हैं उनकी रिलीज होती है वो इनहिबिट हो जाती है. एलिवेटेड कैल्शियम लेवल्स प्रमोट द फ्यूजन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स with the cell membrane and the release of their content into the synaptic space. This release can be blocked by botulinum toxin. In contrast, अगर इसके the toxin in black widow, जबकि जो black widow spider venom का toxin है causes all the acetylcholine synaptic, अगर botulinum toxin है वो inhibit करेगा, जबकि black widow spider का जो टॉक्सिन है वो इसके एसिटाइलकोलिन के रिलीज को ज़्यादा करेगा. इससे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है जब आपको स्पाइडर काटती है. ब्लैक वेनम स्पाइडर है, जब एसिटाइलकोलिन ज़्यादा होगा तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और लो ब्लड प्रेशर से भी आपकी डेथ हो सकती है.
So this is the picture of the whole mechanism. Number one, here is number one is a synthesis. Number one is a synthesis in which the choline acetyl transferase catalyzes the synthesis of acetylcholine from choline and acetyl coenzyme. Here you can see there is a choline which is entered by the co-transport of the sodium ions, and this choline in the presence of the acetylcholine coenzyme A, they form acetylcholine, and this acetylcholine in the second step is uptake into the storage vesicles. Acetylcholine is protected from degradation in the vesicles. So acetylcholine जो है वो स्टोरेज वेसिकल्स के अंदर चला जाएगा. अब स्टोरेज वेसिकल के अंदर से ये रिलीज कैसे होगा? Release of neurotransmitter. Release is blocked by the botulinum toxin. Spider venom causes release of the acetylcholine. स्पाइडर की वजह से एसिटाइलकोलिन का रिलीज ज़्यादा होगा, ज़्यादा एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, जबकि बॉटुलिनम की वजह से इसका टॉक्सिन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा. सो इसका रिलीज जो है वो कैसे होगा? जब आपका कैल्शियम आयन जो है वो बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन जो है वो एंटर होगा. दिस कैल्शियम आयन कि न्यूरॉन के अंदर एक्सेस हो जाएगा. जब न्यूरॉन के अंदर कैल्शियम एक्सेस होगा तब ये वेसिकल्स जो हैं वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करेंगे. नंबर 4 पे बाइंडिंग टू द रिसेप्टर. जब आपका एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया तो ये आपका आ गया प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर और ये आपका आ गया पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर. ओके, एसिटाइलकोलिन प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर पर भी एक्ट करेगा और पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर पर भी एक्ट करेगा. जब पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर में एक्ट करेगा, जो रिमेनिंग एसिटाइलकोलिन होगा वो आपका फिर से डिवाइड हो जाएगा कोलिन और एसीटेट में. दिस कोलिन इज रीअपटेक. So this is the fifth point, which is the degradation of the acetylcholine. Acetylcholine is rapidly hydrolyzed by the acetylcholinesterase. So this is an enzyme which hydrolyzes the acetylcholine, which is this cholinesterase. In the synaptic cleft, तो synaptic cleft में एक enzyme है जो cholinesterase है, जो acetylcholine की ब्रेक डाउन करता है और इस तक कोलिन हमारे पास फिर से आ जाएगा, जिसको हम रीसाइक्लिंग कर सकते हैं. रीसाइक्लिंग ऑफ कोलिन. सो कोलिन इज टेकन अप बाय द न्यूरॉन. दिस ट्रांसपोर्ट इज इनहिबिटेड बाय द हेमिकोलिनम. 3 हमने यहाँ पर इनहिबिटर्स डिस्कस किए, 2 इनहिबिटर्स और 1 एक्सीलेटर डिस्कस किया है. एक तो जो कोलिन के रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं वो हेमिकोलिनम कहलाते हैं, जो रिलीज को इनहिबिट करते हैं वो बॉटुलिनम है, और जो रिलीज को इनहांस करते हैं वो स्पाइडर वेनम है. So this diagram is very important, which whole explain how the acetylcholine releases and acts. So we have discussed in the diagram. So here is the binding of to the receptor. Acetylcholine released from synaptic vesicles diffuses across the synaptic space and binds to the postsynaptic receptor on the target cell, to presynaptic receptor on the membrane of the neuron that release the acetylcholine, or to other targeted presynaptic receptor. The postsynaptic cholinergic receptors so we are here. Okay. The postsynaptic cholinergic receptors on the surface of the effector organs are divided into 2 classes, muscarinic and nicotinic. These are the 2 receptors at which the acetylcholine acts. Binding to a receptor leads to a biological response within the cell, such as initiation of the nerve impulse in a postganglionic fiber or activation
of the specific enzymes in effector cells as mediated by the second messenger molecules. So here we have discussed the two names of muscarinic receptors. And number 5 point is degradation of acetylcholine. The signal at the post-junctional effector site is rapidly terminated because acetylcholinesterase cleaves acetylcholine to choline and acetate in the synaptic cleft. Butyrylcholinesterase, sometimes called pseudocholinesterase, is found in the plasma but does not play a significant role in the termination effect of the effector acetylcholine synapse. So this is what the degradation of acetylcholine, which is a cholinesterase, which is done by the cholinesterase. And the sixth step is the recycling. Choline may be recaptured by a sodium coupled high affinity uptake system that transports the molecule back into the neuron. There it is acetylated into the acetylcholine that is stored until released by a subsequent action potential. This is all about how the acetylcholine is formed and how it releases and where it acts. 3 points we have discussed here. So then now we are going to discuss the cholinergic receptors, जिसको आप cholinereceptors भी कहते हैं. So in this diagram you can see here, this is the muscarinic receptor and this is the nicotinic receptor. Muscarinic receptors, in which the muscarine act on the postganglionic receptor, postganglionic fiber, or the receptor. Acetylcholine acts on the receptor, nicotine acts on the receptor. So if the muscarinic drug comes, it has high affinity at the muscarinic receptor. So you can see it's low to high affinity. Muscarine की affinity ज़्यादा होगी as compared to the acetylcholine, और nicotine की acetylcholine की ज़्यादा होगी as compared to the nicotine. And downward they are discussing about the nicotinic receptor. So if we go from low to high, if low to high means a nicotine receptor where the nicotine acts more as compared to the muscarine. In the muscarine receptor, the muscarine act more as compared to the nicotine. So this is the affinity of the receptor. So types of the cholinergic receptors. Two families of the cholinereceptor designated muscarine nicotine receptor can be distinguished from each other on the basis of their different affinities for agents that mimic the action of acetylcholine. So muscarinic receptors belong the class of G-protein coupled receptors. So this is an example of the G-protein coupled receptors. This is an example of the G-protein coupled receptors, जिसको आप मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी कहते हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की कोई एग्जांपल दें तो आप मस्करीन रिसेप्टर्स की एग्जांपल दे सकते हो. These receptors, in addition to binding acetylcholine, also recognize muscarine, an alkaloid that is present in certain poisonous mushrooms. In contrast, the muscarinic receptors show only a weak affinity for nicotine. So हमने फिगर में देखा है कि muscarinic receptors की weak affinity होगी for the nicotine. There are 5 subclasses of the muscarinic receptors. However, only M1, M2, and M3 receptors have been functionally categorized. So this is an also a multiple choice point that the muscarinic receptors have 5 subtypes, but M1, M2, M3 are functional. First, we are discussing the location of the muscarinic receptor. कि muscarinic receptor होते कहाँ पे हैं? These receptors are found on the ganglia of the peripheral nervous system and on the autonomic effector organs such as heart, smooth muscles, brain, and exocrine glands. Although all 5 subtypes are found on the neurons, M1 receptors are also found in the gastric parietal cells.
So this is also an important point कि जो आपके M1 रिसेप्टर्स होते हैं वो गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स मतलब जो आपके स्टमक लाइनिंग जो होती है उसके अंदर पाए जाते हैं M1 रिसेप्टर और M2 receptor. These receptors are important to understand where the drug acts. जब जहाँ पर ड्रग एक्ट करेगी और फिर उसके अकॉर्डिंग की फंक्शन परफॉर्म करेगी ना तो these are the very important receptors. M2 receptors on the cardiac cells and smooth muscles and M3 receptors on the आपके जो M2 receptors हैं वो कार्डियक सेल्स यानी हार्ट में पाए जाते हैं और स्मूथ मसल्स में और M3 receptors आपके ब्लैडर में होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड स्मूथ मसल्स में M2 भी और M3 भी लेकिन ज़्यादातर M3 रिसेप्टर ब्लैडर में और एक्सोक्राइन में होते हैं Drugs with a muscarinic action preferentially stimulate muscarine receptors on these tissues, but at the high concentration, they may show some activity at the nicotine receptors. So, जो muscarinic drugs होती हैं वो मेजरली मतलब हाई एफिनिटी शो होंगी मस्करिन रिसेप्टर लेकिन लो में जैसे कि हमने डायग्राम में देखा है वो लो में आपकी निकोटिन रिसेप्टर्स पर भी एक्ट कर सकते हैं Now we are discussing the mechanism of acetylcholine signal transduction. Mechanism of acetylcholine signal transduction. A number of different molecular mechanisms transmit the signal generated by acetylcholine occupation of the receptor. For example, when M1 or M3 receptors are activated, the receptor undergoes the conformational changes and interact with the G protein. Designated GQ thus in turn activate phospholipase C. This ultimately leads to the production of the second messenger inositol 1,4,5-triphosphate and diacylglycerol. IPT causes an increase in intracellular calcium can then interact to stimulate and inhibit the enzyme or to cause hyperpolarization, signature contraction. Diacylglycerol activate protein kinase and enzyme that phosphorylates numerous proteins within the cell. In contrast, the activation of the M2 subtype on the cardiac muscle stimulates the G protein, designated GI, that inhibits adenyl cyclase and increases potassium conductance. The heart responds with a decrease in rate and force conductance. So this is all about how the acetylcholine signal transduction. Here the important point is acetylcholine is a G protein coupled receptor. Second are the muscarinic agonist. Pirocarpine is an example of a non-selective muscarinic agonist. Non-selective, it means it can act on M1, M2, M3. Clinically practiced to treat the xerostomia. क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या पायरोकार्पिन xerostomia और ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट के लिए आप यूज़ करते हो Attempts are currently underway to develop the muscarinic agonist and antagonist that are directed against the specific receptor subtypes. M1 receptor agonists are being investigated for the treatment of the Alzheimer's disease. तो हमने देखा था कि M1 receptors जो हैं वो मोस्टली जो आपके स्टमक के लाइनिंग है वहाँ है लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका रिसेप्टर जो है उससे अल्जाइमर डिजीज़ को ट्रीटमेंट के लिए भी डिस्कस किया गया है M3 receptor antagonist for the treatment of the chronic obstructive pulmonary disease और COPD को करने के लिए M3 receptor antagonist because the M3 receptor involved in the lungs. At present, no clinically important agents interact solidly with the M4 and M5 receptor. So the next receptor is the nicotinic receptor. Nicotine receptors, these receptors in addition to binding acetylcholine also recognize nicotine but show only a weak affinity for the muscarine. The same thing for the muscarine and the same thing for the nicotine. The nicotine receptor is composed of 5 subunits. Same. Muscarine receptor also composed of 5 subunits and nicotine too. And it functions as a ligand-gated ion channel. So this is the important point.
जो आपके मस्करिनिक रिसेप्टर्स हैं वो आपके जीपथिन कपल रिसेप्टर्स हैं, और जो निकोटिनिक रिसेप्टर हैं वो लिगैंड गेटेड हैं. Binding of the two acetylcholine molecules elicits a conformational change that allows the entry of sodium ions and resulting in repolarization of the effector cells. Nicotine at the low concentration stimulates the receptor, whereas nicotine at high concentration blocks the receptor. So this is the important point too. कि अगर आप लो कंसंट्रेशन में निकोटीन होगी तो एक्टिवेट होगा रिसेप्टर, लेकिन हाई कंसंट्रेशन में ब्लॉक करेगा. सो निकोटीन एंटेगोनिस्ट के तौर पर भी काम कर सकता है. द डुअल नेचर ऑफ द निकोटीन एट हाई कंसंट्रेशन इट ब्लॉक्स द रिसेप्टर. Nicotine receptors are located in the central nervous system, medulla, autonomic ganglia, and the neuromuscular junction in skeletal muscles. Those at the NMG are sometimes designated NM and other NN. The nicotine receptor of autonomic ganglia differ from those of the NMJ. For example, ganglionic receptors are selectively blocked. So, the nicotine receptor of autonomic ganglia differ from those of the NMJ. For example, ganglionic receptors are selectively blocked by the mecamylamine, whereas NMJ receptors are specifically blocked by the acetylcholine. सो जो निकोटिन रिसेप्टर्स हैं, अब यहाँ पे क्या है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का और निकोटिन रिसेप्टर में क्या फ़र्क है. वो कहना कि निकोटिन रिसेप्टर की जो ऑटोनोमिक गैंग्लिया है वो डिफर करती है फ्रॉम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. जो निकोटिन रिसेप्टर है वो ब्लॉक होता है बाय मैकामाइलामिन, वेयरएज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिसेप्टर ब्लॉक बाय द एट्राक्यूरियम. सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज डिफरेंट हियर and the nicotine receptor difference. Important point ये है कि निकोटिन लो कंसंट्रेशन में एगोनिस्ट का काम करते हैं और हाई कंसंट्रेशन में वो एंटेगोनिस्ट का काम करती हैं. इसके अलावा ये कि ये एनएमजी से डिफरेंट है. एनएमजी को ब्लॉक करने के लिए एट्राक्यूरियम, जबकि निकोटीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के लिए मैकामाइलामिन चाहिए होता है. So this is the whole about the interaction of the cholinergic drugs and the formation of acetylcholine and cholinergic receptors. In this video, we also discussed the classification of the cholinergic drugs. Then we are going to end this video. Next video, we will discuss in detail the drugs which included in the cholinergic agonist. So I think this one here. I'm going to explain you the classification of the cholinergic drugs. You can see here they have mentioned is the direct acting, which include the cholinergic direct acting, in which acetylcholine, these are the direct acting. Direct acting means they directly act on the receptor. Whenever you give the acetylcholine, it finds its muscarinic receptor, then and it acts on it. Botanical, carbachol, सावेमेलिन, निकोटिन, पाइलोकार्पिन. सो इसमें इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो हैं वो आपके एसिटाइलकोलिन, बथानिकोल और पाइलोकार्पिन है. सो आप इसको याद कर सकते हो. मैप ऑफ ABC. मैप M फॉर मस्करीन, A फॉर अरिकोलिन, P फॉर पाइलोकार्पिन, ABC, A फॉर एसिटाइलकोलिन, B फॉर बथानिकोल एंड C फॉर कार्बाकोल. The second one is indirect acting. Indirect acting means कि ये किसी ना किसी इंजाइम को इनहिबिट करेंगे. तो इंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो एसिटाइलकोलिन की जो ब्रेकेज है वो इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से आपका एसिटाइलकोलिन जो है वो रिसेप्टर पर एक्ट नहीं करेगा. तो इट इंक्लूड्स नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन, रिवेस्टिग्मिन. So these are the stigmi which indirectly act to enhance the cholinergic effect. जो आपके colin acetylcholine irreversible that act on the enzyme. Indirect acting irreversible ecotherapy. Reactivation of acetylcholinesterase, which includes pyrrolidine. रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस. एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस की अगर रीएक्टिवेशन करानी होगी
मतलब अगर एसिटाइलकोलिन एस्टरेज वो एंजाइम है जो एसिटाइलकोलिन को ब्रेक करता है। अगर हम एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को ही इनहिबिट कर दें, मतलब ऐसी ड्रग जो एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट कर देगी, तो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को इनहिबिट कर देगी, तो एसिटाइलकोलिन की ब्रेकेज नहीं होगी और इसका अफेक्ट इंक्रीज करेगा। तो हमने ऐसी ड्रग्स लेनी है जो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को इनहिबिट कर दे। सो इन ड्रग्स का जो मैकेनिज्म है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। इधर अभी तक आपने जो इम्पोर्टेंट या जो एम्फसाइज करना है वो क्लासिफिकेशन पर एम्फसाइज करना है। Here I have written this mnemonic to learn the classification of the cholinergic agonist, which is map of ABC. M for muscarine, A for acetylcholine, P for pilocarpine, and these three are the direct acting. Or A for acetylcholine, B for botanicol, and C for carbachol. I will show you the flowchart. You can see here, this is the flowchart of cholinergic drugs. Here you can see choline parasympathetic. There are two classification. Number one, cholinergic agonist. Number two, anticholinesterase. Anticholinesterase are those which inhibit the enzyme. जब enzyme को inhibit कर देंगे तो आपकी acetylcholine की डिग्रेडेशन ही नहीं होगी, acetylcholine ज़्यादा अमाउंट में होगा और अफेक्ट भी ज़्यादा होगा। So cholinergic agonist which includes cholinesters and alkaloids. Alkaloids में आपके आ जाते हैं muscarine, pilocarpine, acetylcholine और cholinesters में आपके आ जाते हैं acetylcholine, methacholine, carbachol, botanicol. So आप direct acting cholinergic agonist को कैसे याद कर सकते हैं? Map of ABC. M for muscarine, A for acetylcholine, P for pilocarpine. Of ABC, A for acetylcholine, B for botanicol, and C for carbachol. So map of ABC are the cholinergic agonist. These are the direct acting cholinergic drugs. Anticholinesterases, which is indirect acting which includes the reversible or irreversible. Reversible जो एंजाइम को इनहिबिट करते हैं लेकिन वो फिर से रीएक्टिवेट हो सकते हैं, और इरिवर्सिबल जो एंजाइम को परमानेंटली तौर पर इनहिबिट कर देंगे और एसिटाइलकोलिन की अमाउंट को इंक्रीज करेंगे। सो इरिवर्सिबल में आप कह देंगे कार्बामेट्स एंड एक्रिडीन, और इरिवर्सिबल में आप कह देंगे कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। सो फाइसोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, पाइडोस्टिग्मीन, रिवेस्टिग्मीन, डॉनपेजिल, ग्लूटामिन, कार्बामेट्स है। एक्रिडीन में आप कह जाएगी टेक्रीन। कार्बामेट्स इरिवर्सिबल में आ जाएगा आपका कार्बारिल एंड प्रोपोक्सर, और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में आप कह जाएंगे इकोथैफेट, मैलाथियोन। मैलाथियोन इज an important one. Diazinon. So this is all about the classification of the cholinergic drugs, cholinergic agonist, anticholinesterase drugs. So I hope you like my video. Kindly subscribe my channel and never forget to click on the bell button. In the next video we will discuss these drugs in detail. So stay tuned and subscribe my channel so you get more updates. Thank you.